Hello friends, welcome to Adda247. You are watching the Hindu editorial discussion and I am Saurabh Day. Well, since आज से नवरात्र स्टार्ट है तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो भाई देखिए आज भी 3 बेहतरीन आर्टिकल्स हमारे पास है। इनमें से एक आर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल आर्टिकल है, एक और आर्टिकल जो है वो सोशल मीडिया पे बेस्ड आर्टिकल है और आज का जो पहला आर्टिकल है गाइस वो न्यूक्लियर पावर पे बेस्ड आर्टिकल है। तो तीनों ही आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये तीनों ही आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में या क्लोज के फॉर्म में या पैराजंबल के फॉर्म में या किसी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम वन बाय वन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस दैट वी हैव एट हैंड। So guys, today's first article is beyond social media. No, I think it's not the first article. Can we just go back to the home, please? मेरे ख्याल से आज जो पहला आर्टिकल है वो शायद दूसरा आर्टिकल है. Yes, exactly. So guys, here's the first article of the day. It's nuclear deal in danger. Now guys, अब ये किस न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है. You must know which nuclear deal exactly is in danger. Actually, we're talking about the Iran nuclear deal. अब देखा जाए भाई तो ईरान ने, now the thing is that you know this particular nation of Iran, they had actually all of a sudden it came to light of the world that the Iranians have attained nuclear power, and there was fear all around that they might make some atomic bombs as well. तो देखा जाए तो ईरान के पास आ गया है न्यूक्लियर पावर. जैसे ही इस बात की खबर फैली पूरी दुनिया में तो हर कोई बहुत डर गया कि कहीं ये जो है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब न बना दे ईरान. तो इसीलिए उसके बाद जो है न्यूक्लियर डील एक साइन कराई गई. ईरान और उसके अलावा 6 और कंट्रियां थी. तो उसके बाद देखा जाए इस न्यूक्लियर डील को हमने हकीकत में लाया. सो टू ब्रिंग ईरान टू द टेबल 6 countries वर इन्वॉल्व्ड एंड फाइनली देयर वाज अ न्यूक्लियर डील इन व्हिच अराउंड 6 countries वर इन्वॉल्व्ड. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस एंड व्हाई एग्जैक्टली इज इन डेंजर. ओके, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑपोजिशन टू द ईरान न्यूक्लियर डील इज नॉट न्यू. अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो अभी के वहां प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो शुरुआत से ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के ऑपोजिशन में रहे हैं. सो हिज ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स टू ईरान न्यूक्लियर डील इज नॉट न्यू. इट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. Now, but by choosing his first address at the UN General Assembly, in which he listed his administration's foreign policy's priorities to slam Iran and to slam Tehran and nuclear accord, he has put to rest any hope of improvement in ties with Iran. Now, recently, Donald Trump gave his first address as American president in the UN General Assembly, and in that UN General Assembly, I think he forgot that he was actually delivering an address in the General Assembly. Because the thing is, because the way in which he was delivering his address, it seemed as if he is standing in the US Senate and not General Assembly of United Nations, because he was absolutely, he just kept out hitting at Iran and various other countries, and he was just reflecting the foreign policies of America and not that of a security member. अब देखा जाए तो भाई जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर लथाड़ रहे थे, जैसे हम बोलेंगे एकदम सिंपल भाषा में, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुराई भी करी ईरान की. और इससे कोई भी बच्ची कुछ ही उम्मीद जो की जा सकती थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में शायद दोस्ती आ जाए, लेकिन वो सभी उम्मीदें जो है अपने आप डोनाल्ड ट्रंप ने लात मार मार के खत्म कर दी. नाउ अब आगे देखते हैं यहाँ पे. इन हिज टायरेड ऑन ट्यूसडे ही कॉल्ड द ईरान डील विच यूएस एंड 5 other countries had signed with Tehran 2 years ago an embarrassment and one of the worst and the most one-sided transactions the United States has ever entered into. 2 साल पहले 2015 में यूएसए और 5 और कंट्री यानी कि 6 कंट्रियों ने जो है ईरान के साथ जो है ये न्यूक्लियर डील को साइन किया था. अब जब 2 साल बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो वो ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा असम्मानजनक, मतलब बहुत ज्यादा असम्मानीय रूप से हमने ये न्यूक्लियर डील साइन किया था, और इससे बड़ा और इससे घटिया न्यूक्लियर डील या कोई भी डील हमारे लिए नहीं हो सकता. अमेरिका के लिए कोई और डील इससे ज्यादा घटिया नहीं हो सकती. Okay, now guys, the thing is that in 2015, around 6 countries in the world, including the Americans, they signed a nuclear deal with Iran. And now, 2 years later, when Donald Trump is the president, then he actually,
he said that it was one of the first, in fact, it was one of the worst deal that the Americans has ever entered into. And also, you know, he said that that particular nuclear deal was an embarrassment. Okay, I hope guys कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे. Now आगे देखते हैं. Unsurprisingly, it triggered a reaction from the Iranian Foreign Minister Javed Zarif and called out Mr. Trump's ignorant hate speech, which he said belonged to medieval or old times. अब देखा जाए तो obvious है कि अगर आप किसी कंट्री की जबरदस्ती बेइज्जती करोगे तो वहां से आपको बेसिकली फाइट बैक भी मिलेगा, और कुछ ऐसा ही फाइट बैक मिला वहां पर अमेरिका को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम था जवाद जरीफ. उन्होंने ये कहा कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हैं, ये बहुत ही पुराने जमाने में जिस प्रकार से जो राजा हुआ करते थे वो दूसरे राजा उसकी जो है जैसे बेइज्जती करते थे, ये वही कह रहे हैं. Now the thing is that, you know, this whole tirade of American President Donald Trump, you know, it actually resulted in a reaction from the Iranian foreign minister, who said that Donald Trump's arrogant hate speech actually belonged to the medieval or old times. उम्मीद करता हूं गाइस कि अब तक जो भी हमने बताया है आपके दिमाग में बैठ गया है. अगर बैठ गया है तो आप यहां लिख भी सकते हो, बैठ गया सर. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. बैठ गया. Okay, now the message from the Trump administration is clear and consistent. The Obama-era pragmatism or policy was an aberration or abnormality, and the priest's regime, okay, and the decades-old hostility between US and the theocratic ruled by priest regime in Tehran stands resumed. अब देखा जाए भाई तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बेइज्जती करी ईरान की, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक समय था ओबामा का, जो कि बेसिकली कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ भी दोस्ती बना के रखें. तो वो जो समय था वो सिर्फ एक अबनॉर्मैलिटी थी, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो दशकों से जो है आपका ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी ही होती आ रही है. और अब जब ओबामा नहीं रहे प्रेसिडेंट, तो वापस वही दुश्मनी यहां पर वापस होने जा रही है. So guys, usually what happened is that there has been decades of hostility between the Americans and the Iranians, and after this particular speech and this round of reactions and interactions, we have to say that the era of President Obama was an aberration, where the Americans tried to befriend the Iranians, and now the hostility is back on the table. Okay, अभी कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है कि सर ये theocratic क्या होता है? Theocratic is a nation which, see, it is a form of government where the government, you know, is actually made of priests. ठीक है, तो जो priests होते हैं जब वो सरकार बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं theocratic. Okay, now the real test before Mr. Trump and the Iranians comes in less than a month. अब देखा जाए तो अभी भी लेकिन यहां पर पिक्चर बहुत बाकी है, क्योंकि जो असली टेस्ट है यहां पर ट्रंप का और ईरानियों का, ये होने वाला है. The real test between Donald Trump and the Iranians is about to come in less than a month. According to the US law, the administration must certify the Iran deal every 90 days. The Trump administration has twice done so, and the next deadline is on October 15th. अब देखा जाए भाई तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से, यूएस लॉ के हिसाब से, जो यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हर 3 महीने में या हर 90 दिन में ईरान डील वैलिड है कि नहीं, सभी कंडीशंस को पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इस बात की पूर्ति करनी होती है. और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद यह पूर्ति 2 बार की जा चुकी है, और अगली बार इसको पूर्ति करने के लिए जो डेडलाइन है वो है 15 अक्टूबर. देखो मेरा बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट है. एनीवे, सो गाइस, द थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द यूएस लॉ, द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट सर्टिफाई द ईरान डील every 90 days or every third month. Now the thing is that after Donald Trump has taken over as president, this deal has been validated twice, and the next deadline for the validation is on October 15th. Now, Mr. Trump has already signaled that he would withdraw the certification next टाइम. और देखा जाए तो जिस तरीके से यहां पर बयानबाजी हुई है वहां पर यूनाइटेड नेशंस में, उसको देख के साफ साफ यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना सर्टिफिकेशन विड्रॉ करने वाले हैं, और वो 15 अक्टूबर को इसको जो है वापस सर्टिफिकेशन नहीं देंगे इस डील को. नाउ द थिंग इज दैट, यू नो, that the way in which the whole American and the Iranian equation happened in the United Nations, it is pretty clear. Okay guys,
20 seconds left, guys. Hurry up. What's the answer? Last 10 seconds, people. Hurry up. What's the answer? Quickly. Come on. What's the answer, guys? अच्छा, कुछ लोगों का शायद बफरिंग हो रहा है बिकॉज उनका नेट खराब है. ओके गाइज, आई एम गिविंग यू 15 seconds more. Come on, guys. 15 seconds more. Give me the answer. Hurry up. Come on. 10 seconds left. What's the answer for 1 and 2? Hurry up, people. Okay, guys. 5 seconds left. Hurry up. What's the answer? Quickly. Chaliye. Now it's my turn to give you the answers. Well, question number 1 is the US President Donald Trump's opposition for the Iran nuclear deal is not new. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहां लिखा हुआ है the real test before Mr. Trump and the Iranians comes in less than a month. Now, can we have the correct answer, please? So guys, the correct answer is right here. जो पहला क्वेश्चन है उसमें थर्ड पार्ट में गलती है और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें चौथे पार्ट में गलती है. अब ऐसा क्यों है भाई? अब ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि देखिए पहले पार्ट में द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज ऑपोजिशन टू द ईरान न्यूक्लियर डील यहां पर होना चाहिए. अब ऑब्वियस है यहां पर ऑपोजिशन फॉर द ईरान न्यूक्लियर डील इज एक्चुअली अ मिस्टेक. जब भी हम लोग यहां पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का ऑपोजिशन दिखा रहे होते हैं, व्हेनेवर वी आर शोइंग द ऑपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी टू अ पर्टिकुलर डील, देन वी यूज ऑपोजिशन टू एंड नॉट ऑपोजिशन फॉर. जब हम किसी एक शख्सियत की ऑपोजिशन दिखाते हैं किसी चीज के लिए तो वहां पर हम लोग ऑपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऑपोजिशन फॉर इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए पहले में यहां पर ऑपोजिशन 2 होना चाहिए. और दूसरे की अगर हम देखो बात करें तो ऑब्वियस है लेस देन नहीं होगा, लेस दैन होगा गाइस, बिकॉज देन शोज कंक्लूजन. ऑलराइट, सो इफ देन, ऑलराइट, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ठीक है. whereas लेस दैन is is something that's used like a what do you say, like a preposition over here. ओके भाई, तो यहां पर than होना चाहिए ना कि then होना चाहिए. So guys, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का स्कोर 2 on 2 हो गया होगा. and if you have answered the questions correctly, do share the video ताकि बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और वो लोग भी मजा उठा सकें इस एडिटोरियल सेशन का. and my dear friends, if you want to know about this article, then you can use the editorial PDF link for reading this complete article. Now it's time for today's second article, and the second article is going to come shortly for you. And guys, so that's the second article today, and it's beyond social media, my dear friends. तो ये beyond social media जो है, देखिए ये आज का दूसरा आर्टिकल है. On September 4, the Cell for IPR Promotion and Management, that's your CIPAM, under the aegis or protection of the Department of the Industrial Policy and Promotion, DIPP, Ministry of Commerce and Industry, launched a social media campaign to promote geographical indications or GIs with the hashtag Let's Talk IP. अब देखा जाए भाई तो 4 सितंबर को जो आईपीआर प्रमोशन मैनेजमेंट यानी कि CIPAM का जो सेल है, जो कि जिसको बेसिकली मिला हुआ है प्रोटेक्शन या संरक्षण अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने एक लॉन्च किया सोशल मीडिया कैंपेन. और ये जो कैंपेन था ये ज्योग्राफिकल लोकेशन को जो है प्रमोट करने के लिए कैंपेन था, जिसको कि हैशटैग लेट्स टॉक IP करके यहां पर प्रमोट किया गया. सो गाइज, ऑन September 4, द सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, that's CIPAM, under the protection of the Department of Industrial Policy and the Promotion, Ministry of Commerce and Industry, launched a social media campaign to promote geographical indications or GIs with the hashtag Let's Talk IP. The press release, ठीक है, I hope guys इतना आप लोग समझ गए होंगे. अब आगे देखते हैं यहां पर. The press release says that the GIs are of utmost importance to the country as they are an integral part of the India's rich culture and collective intellectual heritage, and that their promotion is in line with the government's Make in India campaign. तो भाई देखा जाए तो इस तरह का प्रमोशन इसलिए किया जा रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इसका प्रमोशन करके हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसका जो प्रमोशन है वो हमारी सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ है.
So guys, the press release, the information that was given to press actually very clearly showed that this particular campaign of promoting the geographical indications is of highest of importance, as these are integral part of our nation's rich culture and the collective intellectual heritage of our nation, and it also promotes, it's also in the line with the Make in India campaign of our nation. I hope guys कि इतना आप लोग समझ गए होंगे. Now, it adds that it is an area of strength and optimism for India, as the GI tag has accorded protection to several handmade and manufactured products, especially in the informal sector. अब देखा जाए भाई तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक बहुत ही आवश्यक चीज इसलिए भी है क्योंकि इससे कई सारे यहाँ पर देखा जाए तो हस्तशिल्पों के जो उद्योग है उनको काफी सारा यहाँ पर जो है प्रमोशन मिला है, साथ ही में जो हमारे नेशन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी काफी प्रमोशन मिला है, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में. Now, guys, the thing over here, that geographical information tag is indication tag is also very important because it has promoted, it promotes the various handloom, rather handmade sectors and products of our nation, and also the domestically manufactured products of our nation as well, especially in the informal sector. उम्मीद करता हूं गाइस कि इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा. अगर बैठ गया है तो आप यहां लिख भी सकते हो, बैठ गया सर. बैठ गया, बहुत बढ़िया. Now, CPAM, CPAM proposes to talk about interesting facts and stories on the GIs using social media. तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये जो आपका IPR प्रमोशन मैनेजमेंट का जो सेल है, ये बात ये करता है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से जुड़े हुए फैक्ट्स, तथ्यों को सामने लाता है और नई नई कहानियों को सामने लाता है सोशल मीडिया पर. नाउ, so CPAM proposes So CPAM actually talks about, various interesting facts and stories on the geographical indicators using the social media. Now, आगे देखते हैं. Can boost rural development. Okay. With legislation enacted in 2003, the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999, the GI Act, for their protection, and 295 names registered with the geographical indication industry, GIs today need no introduction. अब देखा जाए तो 1999 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था द Geographical Indications for Goods. ठीक है भाई, उसके तहत 295 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम जोग्राफिकल इंडिकेशन वाले एक्ट में जोड़ा गया है, रजिस्ट्री में जोड़ा गया है, सम्मिलित है. और इसलिए देखा जाए तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ये कोई नई चीज नहीं है. So guys, there has been an act since 1999 and that act has been called as the Geographical Indications Goods Registration and Protection Act of 1999, and since it has been there, 295 products have got registered in the registry of geographical indication, and this act is not new and it doesn't actually need any kind of introduction. Okay, so guys, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे. Now, the proposed campaign is certainly heartening because goods branded as GIs can be made indigenously by local communities independently and in a self-sustained manner. अब देखा जाए तो भाई तो ये जो चीज है, जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को यहां पर दिया गया है, जिन प्रोडक्ट्स को देखिए यहां पर लाया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत, तो इनका जो है उत्पादन, इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है और वो भी हमारे लोकल कम्युनिटीज के द्वारा किया जा सकता है. So guys, the geographical indications today need no introduction, and the proposed campaign, the social media campaign, is very heartening. It's very heartwarming because the goods which come under the geographical indications, they can be made indigenously and they can be homemade, they can be made by our own country, by the local communities, independently, absolutely in a very free way and in a self-sustaining manner. तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा. अगर बैठ गया है आपके दिमाग में तो आप लिख भी सकते हो, बसला सर. Now, let's take a look at the correct question, let's take a look at the question based on this question, and here it is. So guys, which of the following is true according to the passage? तो देखो हमने अभी एक पैसेज पढ़ा, उसके बेसिस पे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं. बताइए इनमें सही जवाब कौन सा है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप गाइस, कम ऑन. Okay, it's our pleasure, Reena Thakur.
Okay guys, 20 seconds left. What's the answer? Only A, only B, only C. क्या होगा बताओ? Come on people, last 10 seconds. Only C and B या all A, B and C? क्या है बताइए? Hurry up guys, come on. 1, 2, 3, 4, 5. क्या होगा? 5 seconds left. Hurry up. वेल गाइज, अब देखो स्टेटमेंट ए जो है, स्टेटमेंट ए में लिखा है ऑन, देखो क्वेश्चन जो है ना ऑन ट्रू, कौन सा सत्य है इसकी बात हो रही है। स्टेटमेंट ए में लिखा है ऑन September 4 द सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट लॉन्च्ड अ सोशल कैंपेन टू प्रमोट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, यहां पर यह दिया है। स्टेटमेंट बी में दिया है द GI टैग हैज अकॉर्डेड प्रोटेक्शन टू सेवरल हैंडमेड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, स्टेटमेंट सी में दिया है GIs नीड नो इंट्रोडक्शन सिंस यस्टरडे। सो गाइज, विच इज द करेक्ट आंसर? एंड द आंसर इज, वेल माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ओनली बी, ऑप्शन नंबर 2। केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। वेल डन प्रसन्ना, वेल डन दीपिका परिहार, and well done Swati K and all the other people who gave the correct answer. Now guys, this was a tricky question. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और जो भी स्टेटमेंट ए में सोशल मीडिया पढ़ गया सोशल कैंपेन को, उससे गलती हो गई होगी, और साथ ही में जो स्टेटमेंट सी में कंफ्यूज हो गया उससे भी गलती हो गई होगी। द करेक्ट आंसर गाइज इज ओनली बी, एंड देयर इज अ मिस्टेक इन स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी एज वेल। सो गाइज, आई होप कि आपका स्कोर 3 on 3 जरूर हो गया होगा। इफ इट्स 3 on 3 then keep sharing this video, keep liking the video and keep on showing us your love. And you know what? Now these are the 2 articles that we have already discussed. If you want to take a look at these articles in detail, then you can use the free editorial PDF link given in the description of the video. Now guys, it's time to take a look at the 3rd article. So let's move on and let's see the next article, which is going to be a financial article. So guys, here's the next article. It's taxpayer rights and obligations. तो देखिए, एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, और ये जो आर्टिकल है गाइस, ये एक ऐसा आर्टिकल है कि हर टैक्स पेयर के लिए बहुत ही दिल वाला आर्टिकल है, बहुत ही दिल की बात, मन की बात, भाइयों बहनों, मन की बात होगी इस आर्टिकल में टैक्स पेयर की। खैर, तो टैक्स पेयर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इट्स बेटर टू बी रफली राइट देन प्रिसाइजली रॉन्ग. These words of British economist John Maynard Keynes best sums up the wave of reforms in the domain of tax administration in India. अब देखा जाएगा guys, तो ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसको समझो यहां पर। It is better to be roughly right than precisely wrong. यानी कि क्या बात है, अगर मान लीजिए कि हम लोग ऑलमोस्ट सही हैं, यानी कि अगर हम लोग एग्जैक्टली सही बात ना करें, अगर हम लोग ऑलमोस्ट सही बात करें, तो वो बात इससे ज्यादा बेहतर है कि हम बिल्कुल गलत बात करें. सो गाइस, इट इज बेटर टू बी ऑलमोस्ट राइट देन बीइंग एग्जैक्टली रॉन्ग. नाउ अब इसको कौन कह रहा है? ये लाइनें हैं जॉन मेनार्ड कीन्स की. जॉन कीन्स की यहां बात हो रही है, जॉन एम कीन्स की बात हो रही है, और वो ये कह रहे हैं. और देखा जाए तो ये जो लाइन है, ये हमारे देश में जो पिछले कुछ साल से टैक्स को लेकर महाभारत चल रही है, उस पर आधारित लाइन है. Now this particular line, it totally suits it very nicely suits the various tax reforms that are going on and that have been taking place in our nation from the last few years. Okay. Now, while tax administration has seen some paradigm shifts both in the domain of direct and indirect tax, the taxpayer still seems to be wanting for greater certainty and fairness in the levy, assessment and the collection of tax. अब देखा जाए भाई, तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो या इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो, बदलाव आए हैं दोनों की तरह के टैक्सेस में, लेकिन अब भी जो टैक्स चुका रहा है वो चाह रहा है कि उससे जो है ऐसे ही टैक्स लिया जाए जिससे कि सही तरीका हो और उसको लगे कि वैल्यू फॉर मनी है. ठीक है भाई, रोड टैक्स तो हम में से हर कोई पे करता है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे घर के ही बाहर जो है गड्ढे ही गड्ढे होते हैं. राइट? Just giving an example, citing an example. So guys, the thing is that, there have been lots of changes in the taxation of our nation, the tax reforms of our nation. But the thing is, and in both the sense of direct and indirect taxes, but still, the taxpayer, what the taxpayer still demands is actually some basic rights, and also the way in which the taxes are actually, utilized in a better way. And the taxpayer feels that, he has paid the tax and he has done a good job. Now,
अब आगे देखते हैं यहां पर। Well, this is where an internationally recognized concept such as taxpayer rights holds well even in the Indian context. अब तो जो बेसिकली टैक्स अदा करता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं टैक्स पेयर राइट्स, और इसकी यहां पर देखा जाए और भारत के सेंस में भी यहां पर यह अग्री करता है, इनफैक्ट यहां पे ये लागू होता है। सो गाइस, नाउ द राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर, इट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ टैक्स पेयर राइट्स एंड इट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड एंड इन द इंडियन कंटेक्स्ट। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट has development strategies in the form of campaigns like Make in India and Startup India. तो भाई देखा जाए तो हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें अलग अलग कैंपेन्स हैं जिसमें कि आपका मेक इन इंडिया भी आता है और साथ ही में देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया भी आता है। नाउ इसके अलावा अब देखा जाए उसके आगे देखते हैं गाइस। अब उम्मीद करता हूं कि अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर अब तक समझ गए हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर बसला। ओके, नाउ the recent introduction of the goods and service tax, which is the most significant overhaul of the taxation system in India ever, also aims to achieve a unified market across the nation for the first time. ठीक है भाई, अब देखा जाए तो जीएसटी जिसके देखा जाए तो एकदम बदल के जिसने रख दिया है हमारे यहाँ के टैक्सेशन को, तो वो देखा जाए तो अब तक का सबसे तगड़ा टैक्स रिफॉर्म है और उसका एम यही है कि पूरे देश के जो टैक्सेस हैं उसको एक कर लिए जाए। Now guys, the GST which has been there, which is the most significant overhaul of taxation system in our nation, aims to achieve a complete and a collective market across the nation for the first time. Now, the intent of the government is clear. It wants to transform India into a manufacturing, investment and research and development hub, and consequently, there would also be an increase in revenue generation. अब देखा जाए तो ऐसा जीएसटी क्यों लाई सरकार, तो देखो जीएसटी ला करके सरकार का जो यहां पर इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि सरकार जो है चाह रही है बदलाव लाना हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और साथ ही में देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छा करना चाह रही है। नाउ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग द जीएसटी टू आवर नेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर। इट वांट्स टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन द इन्वेस्टमेंट्स एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब sectors, and also consequently there should be an increase and expansion in the revenue generation of our nation as well. Now, in the light of such economic aspirations, a fair balance between the taxpayer rights and obligations will only ensure a higher degree of trust between the tax collector and the taxpayer, thus leading to a higher tax yield. तो देखा जाए भाई तो अगर जो टैक्स अदा करता है उसको यहां पर ये क्लियर सामने हो जाए कि वो जो भी टैक्स दे रहा है उसका सही प्रयोग हो रहा है और उसको जो है अच्छा खासा लाभ हो रहा है, तो शायद जो टैक्स पेयर होगा वो मजबूरी में ना आकर के खुशी खुशी टैक्स को पे करेगा। So guys, if the taxpayer gets the feeling of pride, gets the sense of pride, then perhaps he'll be happier in giving the tax or in paying the tax than what the taxpayer is doing as of now. So I hope guys कि आप जो बेसिक थीम है इस पर्टिकुलर यहाँ पर पैरा का उसको समझ चुके हैं। And now my dear friends, it's time to take a look at question number मेरे ख्याल से 5 over here, and let's take a look at that, 4 and 5. So guys, here is the close test. It's a new pattern close test. आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लैंक नंबर 4 में एंड ब्लैंक नंबर 5 में कौन से वर्ड जाएंगे। Your time starts now. Hurry up guys. 45 seconds left. Time starts now. Quickly. Hurry up guys. 35 seconds left. What's the answer? Come on. $25 seconds more. Come on, people. What's the answer? Hurry up. 4 and 5. Okay, guys. 15 seconds left. What's the answer? Hurry up. Come on, guys. Last 5 seconds. Hurry up. Quickly. Come on, guys. Come on. Everyone must answer. सबको जवाब देना है. Well, see, in question number 4, the thing over here is it is better to be blank space right than precisely wrong. Now, options over here are hard or roughly or smartly or smoothly or no correction required. Then, in your question number 5, in your option number 5 rather, blank space number 5, it's written,
the taxpayer still seems to be wanting for greater blank space and fairness in the levy, assessment and collection of taxes. All right, the options are fixture, particularly, certainty, okay, normality, no correction required. So guys, what's the correct answer? Can we have the correct answer, please? So guys, here are your correct answers for question number 4. It's option number 2, which means roughly. ये मैंने आपको बताया था starting में ही. I explained this line to you in the beginning of the session itself, and that's and that is it's better to be roughly right than precisely wrong. बिल्कुल, I explained to you in the beginning itself, and then when it comes down to number 5 over here, obvious है कि यहाँ पर great certainty की बात हो रही है, definiteness की बात हो रही है, and that's why my dear friends, it's about certainty over here. उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर 5 on 5 पहुंच गया होगा. If it's 5 on 5, then my dear friends, it's really very good. It's not 5 on 5, it's still 4 on 5 and around is also a very good score. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है, पिक्चर और ये सेशन दोनों ही बाकी है मेरे दोस्त. Now let's take a look at the next session of this section, rather next section of this session, and here comes the match the meaning. So guys, देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अराउंड 5 वर्ड्स हैं, आपको इनकी मीनिंग मैच करानी है. I'm going to give you not 30, not 60, 90 seconds, and your time starts now. Go. Hurry up, people. Come on, match them all. Match them all. Okay, guys, 75 seconds left. Hurry up. Match them all. Okay, last 60 seconds left. बस 1 मिनट बचा है. बताओ भाई, बताओ क्या होगा जवाब. Well done, Rukaya. She has matched all of them. Well done, Bhanu Prakash. Good job, Arjun. Good job, Kritika. And Sonu. And Sony. Come on, guys. Hurry up. What's the answer? 30 seconds left, guys. What's the answer? Hurry up. Match them all. Come on, people. Match them all. Come on, guys. Come on. 20 seconds left. What's the answer? Hurry up. Okay, guys, come on, hurry up, everyone. 10 seconds left, people, hurry up. What's the answer? 5 seconds more. All right, so perhaps now it's the time to show the correct answer, and the correct answers are, well, guys, here are your correct answers. Pragmatism means policy over here. Theocratic means ruled by priests. Aegis means protection. Hostility means enmity. And indigenous means country made. तो guys, ये जवाब है यहाँ पर. अब बारी है इन वर्ड्स को और उसके मीनिंग्स को आपके दिमाग में बैठाने की, which means it's revision time. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वर्ड्स बोलूंगा and you have to type the meaning of that word quickly. So guys, I hope all of you are ready, and here we start the revision. Okay guys, so type the meaning of pragmatism. Come on guys, बताइए pragmatism का मतलब क्या है? Type the meaning of pragmatism. Yes, well done. Okay guys, now type the meaning of theocratic. Theocratic. Okay, Cratic. Theocratic. बताइए भाई क्या meaning है theocratic का? Well done people. Okay. Now guys, type the meaning of aegis. Aegis. Yes, बताइए क्या meaning है aegis का? Come on guys, type the meaning of aegis. Well done people, बहुत बढ़िया. Now guys, type the meaning of hostility. Hostility. Come on guys, type the meaning of hostility quickly. And yes, well done. Now guys, type the meaning of indigenous. Indigenous. Come on guys, indigenous. What's the meaning of indigenous? Yes, well done people. तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो ये सेशन था वो काफी पसंद आया होगा.
तीनों आर्टिकल्स आज बहुत इंटरेस्टिंग थे, जिसमें से एक फाइनेंशियल आर्टिकल था, एक न्यूक्लियर पावर बेस्ड था और साथ ही में एक जो आर्टिकल था वो सोशल नेटवर्किंग बेस्ड था। इनके अलावा वी आल्सो प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, वी आल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन क्लोज टेस्ट एंड वी आल्सो हैड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एंड वी आल्सो लर्नड लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स एंड इवन वी प्रैक्टिस वोकैबुलरी वर्ड्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एडिटोरियल डिस्कशन का यहां पर ऑल इन वन शो है ये आपको पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग Adda247 बिकॉज विद अस गवर्नमेंट जॉब इज राइट देयर इन योर पॉकेट। और हाँ, जिनका भी एग्जाम है UIIC का, वेल बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप उड़ा के आओ एग्जामिनेशन में। थैंक यू।